of this description. 1. Second was, this insect is very tiny and has a flattened reddish body. It is usually found in the small spaces of beds and feeds on human blood. So it's bed bug. Third, it is mostly brown or black in color and makes a loud chirping sound by scraping two of its legs that are especially designed to do so. Correct answer is cricket. E number. Cricket is a insect. Fourth, it is found almost everywhere at home and outside. It feeds on human and pet food and often transfers dangerous bacteria. 8. Cockroach. Fifth, it is very dangerous insect that feeds on human or animal blood and is capable of spreading deadly viruses. 8. Mosquito. 6. This tiny insect can cause some damage to buildings and crops. It is usually blind and lives in large colonies. 8. It is termite. 7. It is silver, light gray in color and is found mostly in books, binding glue, cotton, etc. It is likes to feed on adhesive and starches. It's silverfish. Alright. Now move to page number 34. Topic is test paper sheet 2. You have to do this test paper sheet in your homework. Now move to page number 35, chapter 23. Answer the questions. First question is, why do some cooking utensils come with a wooden plastic handle? Means जिन बर्तनों से हम खाना बनाते हैं, जिन बर्तनों में खाना बनाते हैं, वो प्लास्टिक के या लकड़ी के क्यों होते हैं? कुछ उनके हैंडल जो होते हैं लगे हुए बर्तनों के, जिनमें हम खाना कुक करते हैं, तो वो ऐसा क्यों होते हैं? आंसर इज, since metals are good conductors of heat, whenever the utensil is heated, the handle too becomes hot. Holding a hot handle can burn our fingers. Hence, plastic and wooden handles are used as they do not conduct heat well. Means कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा बर्न करने पर वो हीट हो जाते हैं. तो जो हैंडल होता लगा हुआ होता है किसी बाउल, आपने घर पे कढ़ाई देखी होगी या पैन कोई देखा होगा, तो पैन में क्या होता है? हैंडल लगा होता है लाइक दिस. तो जब आप बर्निंग गैस पर रखते हो उसको, हीट होगा, देन हैंडल भी गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं. जब आप इसको टच करोगे, देन यू विल गेट बर्न ऑन योर स्किन. सो few utensils are made of utensil handles made of wood and plastic. और प्लास्टिक और वुडन के इसलिए भी बनाए जाते हैं क्योंकि ये ज्यादा हीट कंजर्व नहीं करते जल्दी. सेकेंड क्वेश्चन, why do female kangaroos have a pouch attached to their bodies? कंगारू की बॉडी में एक पाउच होता है आगे स्टमक पर. क्यों? आंसर इज, a fur-lined pouch is connected to the mother kangaroo's body to protect and carry the young one for some time and to keep it warm. Once the baby grows big, she lets the baby out of the pouch. Means a fur-lined pouch is connected to the mother's kangaroo's body to protect.
The presence of carbon black converts the UV radiation into heat, thus adding light to the tires. Question number 4. Why is the Dead Sea called so? Answer: Dead Sea is located between Jordan and Israel. Compared to other seas, Dead Sea has 6 times more salt level. Due to the high saline levels, no living creature can survive in it. Dead Sea, hence the name Dead Sea. Alright, now move to page number 37 and chapter 24, unit 5, sports. Now chapter 24 is Olympic Games and page number 37. In this unit we read about sports. I hope you all like sports like badminton, table tennis, hockey, cricket and many more games. So our today's topic is Olympic Games. Olympics. Modern Olympic Games are considered the world's foremost international sport competition, as more than 200 countries from around the globe come together to participate in various competitions. मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, जो आज के समय का ओलंपिक गेम है, वो आपका एक कंपटीशन लेवल पर होता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स बन गया है। ओलंपिक गेम को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का पोजीशन दिया गया है वर्ल्ड में, और इसमें ग्लोब मतलब पूरे वर्ल्ड से, पूरे संसार से लोग स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं इन डिफरेंट कॉम्पिटिशंस ऑफ स्पोर्ट्स। यानी कि स्पोर्ट्स के जो भी खेल कूद के जो भी आपके डिफरेंट कॉम्पिटिशंस होते हैं, उसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं। These games are held after every 4 years. ओलंपिक गेम्स हमेशा 4 years के गैप में होता है। Alright? So these games are held after every 4 years. History. What is the history of Olympic? The ancient Olympic Games originated around 3000 years ago in the honor of god Zeus in Olympia, Greece. इसकी हिस्ट्री में आपको बताया गया है 3000 वर्षों पूर्व, यानी कि 3000 पहले ईयर्स पहले ओलंपिक गेम्स किसके सम्मान में आयोजित किए गए, मतलब किसके, कोई एक उनका गॉड होगा ना, किसी को उन्होंने डेडिकेट किया था, तो उनका क्या नाम था? गॉड जियस। कहाँ पे थे? ओलंपिया में, जो ग्रीस में है। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स वर हेल्ड इन एथेंस, ग्रीस इन 1896। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुआ था? एथेंस में, इन ग्रीस in 1896 first modern Olympic were held in Athens. At the opening ceremony, King George I and thousands of spectators cheered for 280 participants from 13 nations who were all males and who competed in various events including track and field, swimming, gymnastics, wrestling, tennis, weightlifting, cycling, shooting and fencing. जब आपकी इस गेम की शुरुआत हुई थी तो किंग जॉर्ज फर्स्ट, जो एक राजा थे जॉर्ज फर्स्ट, उन्होंने 1000 स्पेक्टर्स के साथ कितने कैंडिडेट्स को, कितने पार्टिसिपेंट्स को अप्रिशिएट किया था? 280 पार्टिसिपेंट्स को, जो कि 13 नेशंस के थे, एंड ऑल वर द मेल्स। सभी कौन थे? मेल्स थे, मैन थे, एंड उन्होंने सभी में पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन से कॉम्पिटिशन से? लाइक स्विमिंग, टेनिस, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग एंड मैनी मोर। नाउ व्हाट आर द सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स?
the Olympic flag is white in color with 5 interwaved colored rings in the center. Means जो इनका फ्लैग होता है उसमें 5 वेवी रिंग्स बने होते हैं, सर्कल बने होते हैं और उन सर्कल्स का डिफरेंट कलर भी होता है. सर्कल कैसे बने होते हैं? लाइक दिस. ये रिंग्स बने होते हैं ना वेवी फॉर्म और all 5 circles are in different colors. First circle will in blue color, second will black, and third is green, and another one yellow and red. Olympic sign having 5 colors ring in their flag, and the flag is in white color. The color of Olympic waved circles blue, black, red, yellow and green. Learn this sequence properly. These rings represent the 5 continents of the world united by Olympus, while the 6 colors denote the existing colors on all the nation flags of the world presently. The Olympic torch also holds a great significance since the ancient Olympic Games. Olympic motto. Olympic गेम का मोटिव क्या है? The Olympic motto says Cetes Ideas Fortius. These 3 Latin words means faster, higher, stronger. Motto क्या है इनका? What is the motto of the Olympic Games? In Latin language, Citus, Antius, and Fortius. And what is the meaning of this letter? Citus means faster, Antius higher, and the Fortius means stronger. Alright, so you have to learn this circles, colors and motto also. Olympic mascot. The Olympic mascot is usually an animal or some fictional character representing the cultural heritage of the host country. So now move to exercise. In this exercise some question answer are given, so we have to solve it. Now take out your pencil and eraser, sharp your pencil if not sharp, and do your work with neat and clean handwriting. First question is, where is the Olympic flame lit before the start of the games? Means ओलंपिक गेम जब स्टार्ट होता है तो उसकी जो एक लाइट लैंपिंग होती है फर्स्ट, वो कहाँ पर हुई? टेम्पल ऑफ हेरा इन ओलंपिया, ग्रीस. सो राइट हियर आंसर.
Alright. Now second question is, who is the first Indian to win an individual gold in the Olympics? So पहला इंडियन कौन था जिसने ओलंपिक्स में अकेले गोल्ड जीता? He was Abhinav Bindra for shooting. So write here the answer. Abhinav Bindra for shooting. मीन्स अभिनव बिंद्रा को शूटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए और ये विनर हुए थे शूटिंग में, तो इनको गोल्ड मिला था. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, where are the headquarters of the International Olympic Committee located? इंटरनेशनल ओलंपिक गेम की कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? It is located at Switzerland. So write your answer. T-Z-E-R-L-A-N-D. Answer number 4. In which country were the 2016 Summer Olympics held? In Brazil. Next question is, which country is hosting the 2020 Summer Olympics? Answer, Japan. Alright. Again I am repeating all the questions. Answer. First is, where is the Olympic flame lit before the start of the games? Answer is Temple of Hera in Olympia, Greece. Second question is, who is the first Indian to win an individual gold in the Olympics? Answer is Abhinav Bindra for shooting. Question number third is, where are the headquarters of the International Olympic Committee located? Answer is Switzerland. Question number 4 is, in which country were the 2016 Summer Olympics held? Brazil. Question number 5, which country is hosting the 2020 Summer Olympics? Answer is Japan. So, I hope you have completed this chapter. Now, note down your homework. Your homework is, do page number 34. Homework, do page number 34. Read chapter 35. Read and learn chapter 35-36. Okay students, see you in our next class. So till then, complete your work and learn your chapter.